सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं हूं गौरव फ्रॉम बीट फैक्ट्री एंड सबसे पहले ऑफ कोर्स विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2014। आज मैं कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। उसका क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब ये है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं अबाउट टर्मिनोलॉजी, यानी कि एक म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या होता है, एक म्यूजिक अरेंजर क्या होता है, सॉन्ग राइटिंग किसको कहते हैं, लिरिक राइटिंग किसको कहते हैं। आई नो कि कभी कभी चीज़ें सिंपल और प्लेन लगती हैं, दे साउंड ऑब्वियस, लेकिन मोस्टली दे आर नॉट ऑब्वियस। सो म्यूजिक डायरेक्टर एक टर्म है जो इंडिया में तो इन्वेंट हुआ नहीं है, सो इट हैज़ प्रीटी मच बीन यूज्ड और मिस यूज्ड rather I think many times, and it's been confused, and उसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता what their real duty is and what is expected of them. So I'm going to clear out many of these terms. So सबसे पहले let's start with composer. Okay, so again like I said, on this side you will see the information as text, तो आपको clearly समझ आएगा कि क्या उसकी correct terminology है. So composer, basically composer is the guy, वो इंसान है जो melody बनाता है. Okay, in India, the person who's creating a melody, whether he created on a harmonium or he created on a keyboard or a guitar or whatever, जिसने गाने की एक melody बनाई या धुन बनाई, basic, उसको composer कहते हैं. In the West, composer might also include arrangements and basically writing the tune or a whole opera or writing an entire symphony or whatever and composing all the or arranging all the parts around it. यानी कि string section क्या बजा रहे हैं and all that. Arrangement job is also kind of part of the composer's duty. But in India, mostly composer means the guy जो धुन बनाता है. लिरिक राइटर इज दैट पर्सन जो लिरिक्स लिखता है. तो लिरिक्स लिखने के लिए कभी कभी लिरिक राइटर को ट्यून चाहिए, धुन चाहिए, सो ही विल गेट इन टच विद द कंपोजर एंड देन द कंपोजर विल सेंड देम अ ट्यून और फ्रेज और समथिंग जिसके ऊपर वो लिरिक लिखेंगे, और वाइस वर्सा. एक लिरिक राइटर को अगर आप टॉपिक देंगे तो वो उस टॉपिक पे कुछ पोइट्री लिखेगा या फ्रेजेस लिखेगा या लिखेगी एंड फिर आपको प्रेजेंट करेगी इफ यू आर द कंपोजर, एंड देन यू विल टेक दोस फ्रेजेस और उसको आप एक धुन में assimilate करेंगे या create करेंगे एक धुन उसके around and make it work. That's how I work a lot sometimes. I find that very good. जब मेरे को creativity किसी और से मिलती है lyrics की, तो फिर मैं उस पर अपनी tune बना के use करता हूँ. Sometimes if I have a good tune, I'll give it to a lyric writer, they'll write it. So lyric writer की job basically is to pen lyrics to a song to make sure कि वो गाना phonetically अच्छा सुनाई दे रहा है. Phonetically का मतलब ये होता है कि वर्ड्स में खनक है और काफिया मिलान है और वो सब चीज़ें आर टेकन केयर ऑफ. सो एक समझदार लिरिक राइटर इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि वर्ड साउंड गुड टू. सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वर्ड्स में भी एक पावर होती है. सो वर्ड्स की वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए सो दैट इट टचेस यू एंड इट टचेस द ऑडियंस. ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू म्यूजिक डायरेक्टर. म्यूजिक डायरेक्टर बेसिकली एक टर्म है विच केम फ्रॉम थिएटर, बिकॉज अगर आप थोड़ा प्रीवियस टाइम में चले जाए, सो पीपल लाइक मोजार्ट एंड ऑल हु आर क्रिएटिंग, कंपोजिंग, were also musical directors of opera or of plays and theatre. तो क्या करते थे? They were given a play and then वो उसका म्यूजिक कंपोज करते थे and they would direct it too. Direct का मतलब ये होता है कि they would tell what parts will be played where. They would conduct the orchestra. So musical director basically takes over the musical duties. Now कभी-कभी क्या होता है कि a musical director might not have composed the piece also. So it might be कि composer कोई और है, म्यूजिक डायरेक्टर वो है जिसने उस धुन को या उस आइडिया को लेके और निखार दिया है, उसकी अरेंजमेंट्स फ्लरिश करी हैं, या has somehow involved his own creativity to enhance the song, लेकिन he might not be the original creator. So ये actually original definition है म्यूजिकल डायरेक्टर की. That's why it doesn't say composer, it says director. ये एक टर्म है जो इंडिया में काफी यूज हुई है, लेकिन मोस्टली दे आर रेफरिंग when they say musical director to a person जिसने धुन बनाई. So that's how it is. But really इस टर्म का वो मतलब है जो मैंने आपको ही बताया. Okay, anyway, now let's come down to musical producer or music producer. Music producer again बहुत ही वाइड टर्म बन गई है अभी. पहले it used to be something else, but now it is something else. Music producer basically वो इंसान है जो एक कंपोजर या सॉन्ग राइटर की ट्यून प्लस लिरिक्स को लेता है और उसको एक बहुत बढ़िया गाना बनाता है. यानी कि टेक्स दैट आइडिया विच इज अ सिंपल आइडिया एंड उसको वो सोचता है कि यार आई थिंक इट शुड बी डन एज डांस म्यूजिक और अ मेटल सॉन्ग और मे बी अ रॉक सॉन्ग और अ पॉप सॉन्ग. बेसिकली उसका काम ये टू मेक इट कमर्शियल और टू मेक इट अपीलिंग टू द ऑडियंस. यानी कि एक ऑडियंस है, जिस ऑडियंस, जो भी टाइप की ऑडियंस है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, म्यूजिकल प्रोड्यूसर काम है उस पीस को लेना, समझना, इन म्यूजिशियंस को भी इन्वॉल्व करना. यानी कि द म्यूजिकल प्रोड्यूसर इज नॉट प्लेइंग कीबोर्ड्स, वो कीबोर्ड प्लेयर को बुलाएगा, अरेंज करेगा ट्रैक्स को. इवन इफ इज नॉट अरेंजिंग, ही विल ऐड हिज ओन एलिमेंट ऑफ डूइंग दैट और मिक्सिंग और क्रिएटिंग द साउंड ऑफ द होल सिस्टम. सो इन द यूएस म्यूजिक प्रोड्यूसर समटाइम्स हो सकता है एक नोट भी ना बजाए म्यूजिक गाने के अंदर, या कोई अरेंजमेंट्स भी ना करे, लेकिन सिर्फ मिक्सिंग प्रोडक्शन करे या अपना विजन उसको दे के भाई इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स द आइडिया एंड गिव्स इट मोर कलर फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, यानी कि कंपोजर और आर्टिस्ट और बैंड के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से.
सो प्रोड्यूसर को यूजुअली हायर किया जाता था, at least from the Western music societies or systems, to basically take a band, usually band या एक artist जिसके पास अपने गाने ready हैं, उसको एक direction में point करना, उसके band को tight produce करना, यानी कि उसको to make it sound good from the raw material, वो job था एक producer का. लेकिन आज की date में music producer means something entirely different. Okay, it means a guy who's actually probably making the entire music, creating the music idea initially, यानी कि वो पहले chords या एक beat या एक प्रोग्रेशन या कुछ बनाता है जिसके बेसिस पे गाना फिर लिखा जाता है उसके ऊपर, एंड देन एन आर्टिस्ट परफॉर्म्स इट. सो इट्स काइंड ऑफ द अदर वे अराउंड टुडे एज वेल, ऐसा भी हो जाता है. सो इन दिस केस व्हेन आई से आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपोजर, उसका मतलब ये कि आई क्रिएटेड एन आइडिया, then I thought के it might suit this artist, then I got a lyric writer or somebody, or the artist is the lyric writer, like say in Neha Bhasin's case, I created the song Taba and I made the melody and I sang in some weird phonetics, यानी कि मैं za za zi करके गा रहा था, कुछ ऐसे ही गा रहा था. And since I was sorry about that light thing, तो जब मैं ऐसे गा रहा था तो a great melody came out and I arranged it, and I got Saibal Basu, my friend, to come and play guitars on top of it. I programmed the music, everything. I got drums done, and then Neha heard it and she liked it and उसने कहा कि ठीक है, so I'll get the lyrics for this. So she wrote her emotion, यानी कि उसने lyrics अपने हिसाब से मेरी ट्यून के ऊपर लिख दिए. So that's what I did. I actually initiated the process. तो music producer का काम आजकल ये भी होता है to actually create a beat of music which inspires the artist या lyric writer to create a composition or to create lyrics on top of the composition that the producer is giving. So ये काफी broad सी category बन गई है. Then of course musical arranger. So music arranger कौन होता है इंसान? So music arranger की एक fixed duty होती थी. Music arrangers are basically people hired by either a music company or by a production house or by a composer कि भाई मेरी basic tune है, अब इसको आप ornament कर दीजिए. जैसे for example many music directors in Bollywood or Bombay, they don't actually create the parts or the beats or the music that you're hearing at all. Basically वो क्या करते हैं कि they are given a concept for a film and they take that concept और उसके हिसाब से वो एक ट्यून क्रिएट करते हैं और एक लिरिक राइटर के साथ काम करके वो धुन को पूरा करते हैं, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं. Then it's given to a music programmer or arranger as they like to tend to label them, जो basically writes the beats around it or writes the string parts or what the backup vocals should be sound like, या इसमें कौन सा हारमोनियम का पीस बजना चाहिए या तबला ढोलक है या जो भी instrumentation ornamentation है. So music arranger basically writes those parts or as in creates those parts. So when you say कि एक arranger को hire करते हैं, hiring somebody who's going to do the musical or the background of that particular song in simple terms if you want to understand. Okay, so I hope that makes it clear. Now we come to another term called songwriter. Songwriter basically is a combination of two terms. It's the combination of a composer and the combination of a lyric writer. यानी कि जो आदमी lyrics और tune साथ में बना देता है, which is a case with many great singers even in the US like John Mayer and all. तो वो tune and lyrics साथ में ही बनाते हैं because they're inspired. They can write both things together. And usually even if somebody is composing a tune, they tend to write some kind of scratch lyrics. Or if somebody is writing lyrics, they'll have some kind of dhun in their mind. So that's kind of the creative process. Creativity ऐसे ही काम करती है in most cases that I've seen. The songwriter is basically a combination of these two people. So, जब supposing somebody has written lyrics and somebody has created a tune on it, or somebody's contributed a little bit here and there, तो दोनों को ही songwriting credits मिलते हैं because आपको वो differentiate करना बहुत मुश्किल है कि यार इसने ये contribute किया था, उसने वो contribute किया था. So usually, at least in the West or in the US, they give credit to both people. आज की डेट में writing का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि you're a lyric writer. When you say I've written that song, उसके बहुत मतलब है from the West actually. To be honest, it might be कि you've written the beat. So beat को बनाना भी writing कहते हैं because you're creating something. So any kind of creation is called writing. Or if you played a keyboard part, that's part of the production writing. So your name or your credits usually go. And West में, I mean, so far they are very fair. आप उसमें एक जरा सा टिंग भी बजाएंगे गाने में, they credit you. And I've experienced that they are very very fair with credits and that give all of that kind of thing. In India थोड़ा सा misconception रहता है because everybody is fighting to get their name out. And सिर्फ दो लोग जाने जाते हैं एक गाने से, एक या तो music director so called और एक singer. Naturally because singer is in the forefront and an actor of course if it's a film song, so naturally an actor because the actor is portraying that song, which people in the West find extremely strange, but it exists. That's our industry. So in this case basically क्या होता है कि everybody is fighting for that spot. अगर आप singer नहीं है तो you try to, if you're a arranger producer, you're trying to fight for that musical director spot. I did too when I started out. I was like यार ये क्या हो रहा है, I'm not getting credit. But that's how the system is. But eventually, when you stick with the system, people understand what you do and आपको अपना credit मिल जाता है. And once you prove your power, once you prove your worth, के you are a very important person for creating a song and they need you.
And obviously they will, credit, they will make sure they please you. So that is good. I think that is an important part. अगर आपके मन में कुछ confusion थी कि किसका क्या रोल है, मुझे कैसे क्या claim करना चाहिए for my production or song writing or whatever. So I hope this makes it clear. And I'll be back again अपने blog में with some new information for you and some new tutorials. Again, there's a subscribe button on that side. Please press that. मैं आपसे दरखास्त करता हूँ क्योंकि it's important that हम इस community को grow करें. If you feel that this information is useful to your friends or anybody, please do share it and please do give us a like below because that helps us spread our word.